students, we are on the last question of this chapter number 3 exercise, media and its impact. And the last question is about putting some punctuation marks in the paragraph. You know, punctuation marks are really important for your creative writing as well as your impression of your writing in any format, or we can say in any platform. You must be aware of the uses of punctuation marks in order to put beautification in your creative writing. Let's put some punctuation marks in the last paragraph. The paragraph is, there are two means of communication, electronic and print media. The media include films, television, internet, book, magazines and newspaper. It provides us information as well as entertainment. So students, सबसे पहले जब paragraph start होता है तो उसका first word capital होता है. So हमारा first word there आ जाएगा. There are two means of communication, electronic and print media. अब यहाँ पे student बात खत्म हो गई तो it means we need a full stop here. फिर दोबारा हमारा कैपिटल वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा. द मीडिया इंक्लूड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लिस्ट जो है ना वो आएगी. अब लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग हमेशा सेमी कॉलन यूज करते हैं. तो हमारे पास अब लिस्ट इंट्रोड्यूस हो गई. द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, कॉमा टेलीविजन, कॉमा इंटरनेट, कॉमा बुक्स, कॉमा मैगजीन एंड न्यूज़पेपर. अब यहाँ पे भी ये बात खत्म होगी तो हमने फुल स्टॉप को यूज करना है. अब हमारा नया सेंटेंस शुरू हुआ तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज आपने देखी है. यहाँ पे फिल्म, टेलीविजन, इंटरनेट और बुक्स, मैगजीन्स, ये सारी एक लिस्ट है. इस लिस्ट को हम लोगों ने एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमर्स डाले हैं और कॉमर्स का काम होता है लिस्ट को सेपरेट करना. So students, we are done with the punctuation marks putting in last paragraph, and we have put some of the punctuation marks in the paragraph given in the question. Students, this is Sardar Hamza, your English instructor from tutoria.pk. Hope you understand all of the chapter, including the chapter explanation, summary of this chapter, question answer, and all of the related grammatical topics. This was wonderful chapter from my side and I hope you understand it very well. See you in the next chapter. Until then, take care and Allah Hafiz.